Hello friends, this is the exercise 9.1 of the chapter Algebraic Expressions and Identities of NCERT book class 8th, which is related to identifying the terms of an algebraic expression, to find out your factors as well as coefficients of the terms. There are some problems related to addition and subtraction of algebraic expressions. So let us discuss the questions one by one given in this exercise 9.1. Question number 1 is identify the terms, their coefficients for each of the following expressions. These are algebraic expressions. Here we have to identify the terms. As we know that terms are separated by plus or minus sign, so we can easily identify the number of terms, how many terms are there and which are the terms. In this expression, as these two terms are separated by minus sign, means this expression has only two terms. As I said that the terms are separated by plus or minus sign, so we can easily find out. Here the terms are 5xyz square and minus 3zx. Now their coefficients means numerical coefficient unless otherwise stated. We will find out the numerical coefficient only. So numerical coefficient of this term is 5 and of this term is minus 3. Similarly, for the next expression, how many terms are there? Clearly it contains 3 terms, namely 1, x and x square. Coefficient of this is 1 itself, coefficient of this is 1, which is understood here, and coefficient of x square is also 1, which is understood here. Similarly, for third expression, here too there are 3 terms, 1, 2 and 3. Coefficient of this term is 4, coefficient of this term is minus 4 and coefficient of this term is 1. It has 4 terms, 1, then this is the second, third and fourth. Coefficient of first term is 3, coefficient of second term is minus 1, then plus 1, then minus 1. Here it contains 3 terms, 1, 2, 3. Coefficient of this term is 1 by 2, 1 is understood here and by 2. Similarly, 1 by 2 is the numerical coefficient of this term and minus 1 for this term. Here numerical coefficient of this term is minus 3, of this term is minus 0.6, then for this it is 0.5, which have been written in this slide. Coefficient of this term is 0.3, of this term is minus 0.6 and of this term is 0.5. Now proceeding to question number 2. Classify the following polynomials as monomials, binomial, trinomials, and which polynomial do not fit in any of these 3 categories. As we know that if
an algebraic expression contains only one term is known as monomial. If it contains two unlike terms, then that is known as binomial. If it contains only three unlike terms, then it is known as trinomial, and so on. And if a polynomial contains more number of terms, then that algebraic expression is known as polynomial. Poly means many. Actually, all of these are polynomials, but specifically it is monomial because this is only one term. PQR is one term. So these are examples of monomials. X plus y, here there are two terms. So this is example of binomial. Similarly, this is binomial, this is binomial, this is binomial, this is binomial, because these two terms are unlike also. So cannot be added or subtracted. These are the trinomials because they contains only three unlike terms. Now the polynomial this contains four terms and polynomial this contains four terms. These are the two polynomials which are neither monomial nor binomial nor trinomial. So we will write that these two polynomials do not fit in any of the given three categories. Now question number 3. Add the following: AB minus BC, then BC minus CA, then CA minus AB. These three expressions are to be added. इन तीन एक्सप्रेशंस को हम दो तरीके से ऐड कर सकते हैं. पहला तरीका कॉलम मेथड, जैसा कि नीचे दिखाया गया है. लाइक टर्म्स को लाइक टर्म्स के नीचे ही रखना है, अनलाइक टर्म्स बिल्कुल सेपरेटली रखना है. ये कॉलम मेथड है. और एक हॉरिजॉन्टली भी हम इसको ऐड कर सकते हैं. जहाँ पर कामा लगा हुआ है वहाँ प्लस लगाना है, क्योंकि ये एडिशन का प्रॉब्लम है. यहाँ पर पहले ए बी माइनस बी सी लिखा गया है, फिर हमें लिखना है बी सी माइनस सी ए. तो बी सी के नीचे आ जाएगा और सी ए डिफरेंट है तो उसे हमने अलग लिखा है. देन सी ए माइनस ए बी, तो सी ए को सी ए के नीचे और ए बी को ए बी के नीचे विद साइन रखना है. जहाँ कुछ नहीं है वहाँ जीरो आप लिख सकते हैं. अब ऐड करना है. तो सिंस वन ए बी इज पॉजिटिव एंड अदर इज नेगेटिव, सो कैंसिल आउट, जीरो हो गया. इसी तरीके से माइनस बी सी प्लस बी सी जीरो हो गया और माइनस सी ए प्लस सी ए जीरो हो करके इसका आंसर जीरो आ रहा है. इसी प्रॉब्लम को हम हॉरिजॉन्टली कैसे लिखते? ए बी माइनस बी सी पहला एक्सप्रेशन, देन प्लस बी सी माइनस सी ए, देन प्लस सी ए माइनस ए बी. नेगेटिव ए बी पॉजिटिव ए बी से, नेगेटिव बी सी पॉजिटिव बी सी से, नेगेटिव सी ए पॉजिटिव सी ए से कैंसिल होकर के रिजल्ट जीरो मिलता, जैसा कि पहले मेथड में मिला हुआ है. यहाँ पर दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट और चौथा पार्ट को इसी तरीके से करके दिखाया गया है. ए बी माइनस ए, सॉरी ए एंड माइनस ए इक्वल एंड
r of opposite side gives 0. Minus b plus b 0. 1ab, so 1ab. Then minus c plus c 0. Then BC and then AC. Final answer is AB plus BC plus AC. हमें इसमें केवल यही ध्यान देना है कि लाइक टर्म्स को लाइक टर्म्स के नीचे ही रखना है और फिर कंबाइन करना है। अनलाइक टर्म्स जैसे यहाँ पर ये अनलाइक टर्म्स हैं, LM कहीं भी यहाँ पर नहीं है तो ये अलग ही आएगा। और फिर जैसे ऐड करते हैं यहाँ 1l स्क्वायर देन 1l स्क्वायर गिव्स 2l स्क्वायर, 1m स्क्वायर गिव्स 2m स्क्वायर। इसी तरीके से 2n स्क्वायर देन 2lm 2mn 2nl। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 is related to subtraction. Subtract this expression from this expression. तो जिस चीज़ को निकालना है उसे पीछे लिखेंगे या नीचे लिखेंगे। इसमें से निकाला जाना है इसलिए इसे पहले लिखेंगे। 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3 पहले लिखेंगे और इसमें से निकालना है तो हम इसे नीचे रखेंगे, लेकिन फिर वही उसी बात को ध्यान में रखना है कि 4a 12a के नीचे आएगा। माइनस 7ab माइनस 9ab के बीच आएगा, देन 3b 5b के नीचे और 12 नंबर है वो प्योर नंबर के नीचे आएगा। क्योंकि ये प्रॉब्लम सब्ट्रैक्शन की है इसलिए सब्ट्रैक्शन में हम जो चीज़ निकालनी है, जिसे निकालना है, जिस एक्सप्रेशन को निकाला जाना है उसके साइन चेंज कर देते हैं। जो पॉजिटिव 4a है उसे अब नेगेटिव ट्रीट करेंगे, नेगेटिव वाले को पॉजिटिव, पॉजिटिव को नेगेटिव ट्रीट करना है। अब फिर सिंप्लीफाई करना है। आफ्टर चेंजिंग द साइन वी विल कंबाइन 12a पॉजिटिव एंड नेगेटिव 4a अपोजिट हो गए तो माइनस हो जाएंगे, 8a पॉजिटिव आएंगे, ये भी माइनस 9a और प्लस 7 तो नेगेटिव 2ab, देन 5b माइनस 3b पॉजिटिव ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है, पॉजिटिव 2 भी आएंगे और ये सेम साइन के हो गए तो एडिशन होगा और माइनस 15 इसका आंसर आएगा। इसी तरीके से यहाँ बी पार्ट को भी किया गया है और नेक्स्ट स्लाइड में सी पार्ट को करके बताया गया है। किसी भी एक्सप्रेशन में टर्म्स इधर उधर हो सकते हैं, लेकिन हमें लाइक को लाइक के नीचे ही विद साइन लिखना है। अगर साइन नहीं है दिखाई दे रहा है तो उसमें उसका साइन प्लस होता है। उम्मीद है कि इस वीडियो में दिए गए क्वेश्चंस का सिंप्लीफिकेशन आपने समझा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।